करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का टास्क 3। Assuming the role of CN Nigan, the chief executive officer Nelson Kober has sent you a link to a blog called Business Times blog. It refers to an increasing popular term called performance excellence. Nelson has said that not only is this an area that may need to be exhibited as part of part of any financing initiative if SHC pursues the secrecy option, but it is something that SHC should strive for regardless of the need to raise new external finance. And Madam Nelson has said that not only is this area that may need to be exhibited as part of any financing initiative, we pursue the secrecy option, but that it is something the SSC should strive for regardless of the need to raise new external finance. As Nelson believes the SSC is an excellent company, but he wants to know whether there are areas where others may not see it as being so. He also wants to consider whether these are areas in which the company should make voluntary disclosures in the annual reports in order to enhance SSC's accountability to investors. ठीक है? An initial assessment of whether SHC would satisfy the criteria of performance excellence. अच्छा एक मिनट ना हमको बात करनी है SHC whether it will be able to satisfy the criteria of performance excellence. Performance excellence के लिए हम लोग बैडरिज मॉडल यूज करते थे, इतना मुझे पता है। इनिशियल चैप्टर्स में वो था, लेकिन बैडरिज मॉडल के अंदर क्या था? आई थिंक वो LSC वर्म था। LSC वर्म वाज इन बैडरिज ना, वो लीडरशिप स्ट्रेटजी, वो सारी चीजें। तो वो अपन डाल देंगे इसके अंदर, वो 7-8 चीजें कुछ तो वो अपन डाल देंगे। अपने को ये वाला एग्जिबिट पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। बिजनेस टाइम्स ब्लॉग। In this blog post, we examine the country's seeming obsession with performance excellence ever since government chose this measure as a way of choosing business supply. Performance excellence has become the buzzword in the business community. Performance excellence aims to take a systematic approach of achieving excellence. It looks for total involvement at all levels of the business, from leaders of the organization to staff to the process developers. Only if all the areas are seen to be excellent can the organization itself achieve excellence. The result should allow the organization to efficiently and effectively achieve its missions and goals. Our own government wants to develop a similar award system. It has been at the forefront of the chancellor's business briefings, and not only is it a big determinant in the awarding of the business contracts, but the government are looking at awarding funding to organizations who want to pursue their ideals. The increased presence and prevalence of the term might lead to finance providers using some of the framework measures in then determining the provision of finance to the organization. एक मिनट ये क्या है? The increased presence and prevalence of the term might lead to finance providers using some of the framework measures in determining the provision of the finance to the organizations. ओके, दिस इन टर्न कुड मतलब जो फाइनेंस प्रोवाइडर्स है वो इन मेजर्स को देख के अपनी कंपनी को पैसे देंगे। This in turn could lead to organizations performing their own introspections on whether they meet the expectations of their finance providers. But is performance excellence actually something new? Haven't organizations always strive for excellence? Surely, the best indicator of performance excellence is financial performance. If a business performs well for shareholders, surely it is performing excellently. Or if a not-for-profit improves its benchmark performance, isn't it performing excellently? Surely this focus on performance excellence is just more administrative introspection that forms an unnecessary distraction at a time an organization should be focusing on core activities and results. What are your experiences with performance excellence?
डज योर ऑर्गेनाइजेशन परस्यू परफॉर्मेंस एक्सीलेंस, डू यू थिंक इट, ओके ठीक है। तो अपन एक काम कर देते हैं, बैटरीज मॉडल सबसे पहले लगा देते हैं, उसके अंदर लीडरशिप बोल देंगे, स्ट्रैटेजी तो जो कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है परफॉर्मेंस की वो बोल देंगे। सी में क्या था, सी में आई थिंक कस्टमर्स आते थे, टू वैल्यू इट्स कस्टमर्स बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट की स्टेक होल्डर्स, ये बोल देंगे। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं, वर्कफोर्स। ठीक है, हम लोग वर्कफोर्स लिए बहुत सारी चीजें करते भी थे ना, यहाँ पे ऊपर कहीं तो बोला गया था। हाँ, और पता है कि हमें सिर्फ एलएसी वर्म अप्लाई नहीं करना है, हमें एलएसी वर्म फॉर, मतलब एलएसी वर्म मतलब वो बैलरिज मॉडल अप्लाई करना है सीक्रेसी ऑप्शन के लिए, ऐसा है ना वो। जो वाला आई डू वर्क फॉर जॉब रीजन बट हैव सम ऑफ द बेस्ट स्टाफ इन द वर्ल्ड, ये वाला बराबर है। और एक कहीं पर तो था एक और बार कि अगर हमने सीक्रेसी ऑप्शन को कंसिडर किया तो हम लोग बहुत सारे वर्क, हाँ ये देखो, मोर जोग्राफिकल डाइवर्स वर्कफोर्स गो फॉरवर्ड। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है, ये वाला नहीं है, वो कुछ तो कहीं तो और था वो, कि अगर हमने बेसिकली वर्कफोर्स को, अगर हमने बेसिकली सीक्रेसी ऑप्शन को ले लिया तो हमारी वर्कफोर्स ज्यादा सिक्योर रहेगी अपने जॉब को लेके, ऐसा कहीं पर तो था यार, वो मेल में था क्या वो। आई गेस मेल में था, तो वो मैं देख लूंगा। जैसे वो में ऑपरेशंस आते हैं, ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर गोइंग टू चेंज एंड सो आर द कल्चरल, एंड सो इज द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद स्ट्रक्चर्स, ये सब बोल देंगे क्योंकि वो लोग एक सीक्रेसी ऑप्शन कंसिडर करने वाले हैं इन ऑर्डर टू गो फॉरवर्ड। उसके बाद लेट्स सी हम फिर आर में क्या था, रिजल्ट्स, रिजल्ट्स में तो कंपैरिजन करना चाहिए और उसके हिसाब से रिवॉर्ड्स देने चाहिए, वो वाला ठीक है। और लास्ट में मेजरमेंट्स एनालिसिस एंड नॉलेज वो आता है। मेजरमेंट्स एनालिसिस और नॉलेज के लिए क्या बोलेंगे, मेरे को उतना आइडिया नहीं है उस बारे में, बट पहले ये हम स्टार्ट कर देते हैं आंसर के साथ, है ना। लेट मी स्टार्ट एंड देन कम बैक। ये देखो, ये मेरा आंसर, ठीक ठाक लिखा है मैंने ये वाला। काफी सही, काफी सही। अभी देखते हैं ये वाला, एनी अदर मॉडल ऑफ सेंस, हाँ ठीक है। use of performance excellence, firstly it should be noted that there are number of issues in using this approach to assess the performance and or excellence of SHC. The business block provided by showing a bias toward this measure and a wider source of opinion should be considered before we press ahead with a full commitment to this process. Baldrige framework is only one way to assess excellence, and we may need to consider the other measures. हाँ, ये वाला एक्चुअली पॉइंट काफी सही है कि बैलरिज का तो एक अप्रोच है, पर इसके अलावा भी कुछ चीजें हो सकती है जो कंसिडर की जा सकती है। हाँ, the blog indicates that this is vital component in the award गवर्नमेंट फंडिंग, अरे ये वाला पॉइंट भी कॉपी पेस्टेड ही पॉइंट है जो उन्होंने वो एग्जिबिट से लिया है, दिस आई कुड हैव यूज्ड, but we are not seeking government funding and it may be that other finance providers do not actually use this framework. If we decide to press ahead with Baldridge's framework, it considers the combination of the following areas in assessing business performance excellence. पहला आता है leadership. SHC shows strong leadership from the top. The current strategic decision is being made inclusive with all stakeholders being considered, and there appears to be focus on the objectives of constant innovation, ethical behavior, and community support. There is good corporate governance on the board with an equal balance of executive and non-executive directors, and the non-executive directors representing a wide range of stakeholder groups. Functional areas are covered well with no evidence of disputes between functions. Okay, मैंने ऐसे लिखा है लीडरशिप के बारे में कि टोन इज सेट एट द टॉप, तो देयरफॉर जो जो चेयरमैन और ये सीईओ वगैरह है, सीनियर एग्जीक्यूटिव, इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि इनको एक राइट राइट डायरेक्शन में कंपनी को लेके जाना है वगैरह। Strategy. We have strong strategic planning and a strong comparative advantage. The discovery of the sinking method would provide evidence of continuing focus on the objective of innovation and improvement. The strategy is supported by strong action plans and past strategic implementation has shown a successful level of success for the company. ठीक है,
आगे बढ़ते हैं कस्टमर्स के ऊपर। वी हैव रेगुलर ब्रीफिंग्स एंड डिस्कशन ग्रुप विद कस्टमर्स, बट दिस इज वन एरिया where we may need to provide more evidence of excellence. We need to show that we are measuring the satisfaction, segmenting customers, improving customer retention, and effectively dealing with customer complaints. The sales and marketing team will have to work on providing evidence in this area. कस्टमर्स के ऊपर मैंने भी एक्चुअली ना, मैंने ये दो पॉइंट्स काफी वेग लिखे हुए हैं। थिंकिंग मेथड, ये ना मुझे लगता है मुझे एसएचसी के रिलेटेड थोड़े ज्यादा लेके आने चाहिए थे। मैंने पहले थोड़ा वेग लिखा, एंड देन उसके बाद मैंने एसएचसी के रिलेटेड लिखा। मैंने हर हर टाइम वैसे ही किया। मैं थोड़ा सा वर्कफोर्स के बारे में लिखा, देन मैंने वापस उस चीज को एसएचसी के ऊपर लेके आया। ठीक है ना। भी फिर आते हैं मेजरमेंट एनालिसिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट। when benchmark when we benchmark ourselves against industry averages. We have regular customer briefings, discussion groups, and the sync method discovery should evidence strong knowledge management. These should give assurance in this framework measure. ठीक है। आगे बढ़ते हैं वर्कफोर्स के ऊपर। Our history provides evidence of our workforce engagement. We have always sought to engage, improve, and empower our workforce, particularly in Swan Hill community. ये मैंने काफी सही लिखा है। The impact on job design is already an early consideration. The impact on job design is already an early consideration in the new strategic development, which should provide further evidence of a focus on workforce efficiency and engagement. Ali Hamels is confident that we have some of the best staff in the world, and perhaps we should look at measure to evidence this. Next is operations. You say लिखा है। Workforce values employees, ये 20,000 people vote here. While the discussion between the board members choosing secrecy option, the secrecy option was the best way to secure long-term employment. ये लिखा है। Unhappy, then if the staff is not motivated or is unhappy, then the quality of work will deteriorate. ये मैंने लिखा है। अब ऑपरेशंस के ऊपर आई डिड नॉट हैव एनीथिंग टू राइट। मैंने इसको लास्ट लिखा है एक्चुअली ऑपरेशंस को। वी शुड बी एबल टू एग्जिबिट दैट एसएचसीज प्रोसेसेस are strong. We have a history of successful innovation, and the discovery of the new sync method should illustrate that the process is particular continues to be source of strength of the company. There is also a good discussion, sorry, there is also a good decision making process. There's also a good decision making process as evidenced by how sync method decision is made, as well as good support processes in areas such as human resource. एक मिनट ना। We should be able to exhibit that SHC's processes are strong. हम लोग को एसएचसी की प्रोसेसेस स्ट्रांग है, ये बताना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ सक्सेसफुल इनोवेशन एंड डिस्कवरी ऑफ द न्यू सिंग मेथड शुड इलस्ट्रेट द प्रोसेस इन पर्टिकुलर कंटिन्यूस टू बी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। ओके, ठीक है। तो इनोवेशंस, इसके अंदर इनोवेशंस आने चाहिए थे एक्चुअली, वो सही है। रिजल्ट्स, द मार्केट एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स शुड बी अवेयर ऑफ अवर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिजल्ट्स। वी शुड बी एबल टू सप्लीमेंट दिस विद नॉन फाइनेंशियल, अरे मैंने नॉन फाइनेंशियल बेंचमार्क्स के बारे में नहीं लिखा। which will show that we are ahead of the industry in most measures. We may, however, need to supplement this with wider results in areas such as customer satisfaction, workforce engagement, but these should be readily evidenced from within the business. Actually, मैंने results के कुछ कुछ points ना यहाँ पे measurement analysis और knowledge में लिखे हुए हैं। मैंने क्या results में लिखा है कि एक तो हमारा the current scenario we can see that मैंने एक लिखा हुआ है कि अगर हमारे जो जो results है वो प्लानिंग के साथ मैच नहीं करते, सो दैट विल लीड टू, सो हमें उन वो डेफिशिएंसीज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कोई बात नहीं, ये ए हो गया। आगे एक्सप्लेनिंग व्हाई द डिस्क्लोजर ऑफ वॉलंटरी इंफॉर्मेशन इन द एनुअल रिपोर्ट्स कैन एनहांस कंपनीज अकाउंटेबिलिटी टू इक्विटी इन्वेस्टर्स। explain why disclosure of voluntary information in annual reports can enhance the accountability to equity shareholders. 6 मार्क्स के लिए ट्राई करते हैं मिनिमम 6 से 7 पॉइंट लिखने की। एक है कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को पता चल जाता है कि हमें इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है कि नहीं। कई बार कंपनीज वॉलंटरी डिस्क्लोजर इसीलिए देती है क्योंकि उनके जो फाइनेंशियल मेजर्स होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं। सो देयरफॉर
the company should make sure that they are not providing over disclosures, because over disclosures will lead to suspicion being built in the minds of the equity investors. Also, it might form boredom in them. ये मैं लिख सकता हूँ। आगे, additional performance measures helps the investors make decisions regarding what is the discount factor, what is the rate of return that is expected for the potential investors or the investors. Certain equity investors might not be from the equity background or might not be from the finance background itself. So therefore, additional performance measures will help them understand the ये language, make their decision. Um, Secondly, जो voluntary disclosure होती है, in this voluntary information in annual report segment, easy language can be used, which can be very helpful to such investors. और कंपनी अकाउंटेबल क्या है देने के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है एक तो, विच इंक्लूड बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट बोलते थे उसको, एक और शब्द था यार उसके लिए। अच्छा ठीक है, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लोज, और क्या हो सकता है इसके अंदर। दिस कैन ऑल्सो इंक्लूड कस्टमर फीडबैक्स वगैरह, वो सब लिख लिख सकते हैं। Helps the company to get a 360 view of the organization, 360 degree view of the organization, ये लिख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स है। ठीक है, मैं अभी लिखना स्टार्ट करता हूँ, देन वील कंपेयर। तो ये देखो, ये मतलब मैंने आंसर लिखा है, इसमें मैंने क्या क्या लिखा है। बिल्डिंग दी रेपुटेशन इन फ्रंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, मैंने यहाँ पे 360 डिग्री, और हमारे एम्प्लॉयज का भी मतलब वो नॉलेज बढ़ जाएगा, मैंने वो लिखा है। सिंपलर लैंग्वेज में होगा, और जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं होंगे उनके लिए बेटर होगा, ये मैंने लिखा है। प्रीवियस ईयर के हमको कंपैरिजन देने पड़ेंगे, ठीक है ना, एडिशनल डिस्क्लोजर्स के। और कंक्लूजन में मैंने वही लिखा है कि वॉलेंट्री डिस्क्लोजर्स वगैरह से क्या मतलब, वॉलंटरी डिस्क्लोजर ज्यादा ओवरबर्डन भी नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सब मैंने लिखा है। 6 माह के लिए आई थिंक इतना काफी होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। इन्होंने इतना आंसर लिखा है। voluntary voluntary disclosures are an effective way of redressing the information asymmetry that exists between management and investors. In adding to mandatory content, voluntary disclosures give a fuller picture of the state of the company. इसमें क्या क्या आता है, वो information helps investor decide whether the company matches their risk, strategic and ethical criteria and expectation. मैंने इसको लिखा है whether the potential investors want to invest in the company or not. I don't know whether इसका सेम वे में वो लोग लेंगे कि नहीं। Makes the annual reports more forward looking, predictive, whereas majority of the numerical content is backward facing। ये वाला मैंने लिखा है कि अ, देखो, financial reports including financial statements of the company provide historic information, whereas additional voluntary information of the company can provide predictive information, ये मैंने लिखा हुआ है। Helps transparency in communicating more fully, thereby better meeting the agency accountability to investors, particularly shareholders. There is considerable amount of qualitative information that cannot be conveyed using statutory numbers। ओ, ये वाला काफी अच्छा पॉइंट है कि कुछ कुछ statutory information जो है मैं numbers के थ्रू convey नहीं कर पाऊंगा। Voluntary disclosures give a more rounded and more complete view of the company. It gives strategies, purposes and values। मैंने इसको ऐसे लिखा है कि quality of the knowledge of employees who are collecting the voluntary information in the annual reports will improve as they will be looking at a 360 degree perspective of the organization। ये मैं थोड़ा पता नहीं मैंने एम्प्लॉयज के बारे में क्यों लिखा, मुझे समवट ऐसा लगा कि हमारी अकाउंटेबिलिटी और हमारी मतलब नॉलेज कैसे बढ़ सकती है, वैसा हमको यहाँ पे बताना है, बट नहीं, वैसा नहीं था। Voluntary disclosure enables the company to address specific shareholder concerns as they arise, such as responding to negative publicity। मैंने इसके कंपेरिजन में ऐसा लिखा है कि reputation is built in front of the shareholders with the fact that the company is providing more information than what was actually needed। ऐसा मैंने लिखा है। आई थिंक ओवरऑल ठीक ठाक ही लिखा था। ठीक है, ठीक है, दैट्स इट।